Coldrif Cough Syrup, a medicine trusted by many, is now at the center of a tragic public health crisis. Since early September, at least 14 children have died in Chhindwara, Madhya Pradesh, and several other places in Rajasthan from suspected kidney failure. The common link? Coldrif Cough Syrup. The ministry said samples of Coldrif Cough Syrup manufactured by Sresan Pharma in Tamil Nadu were tested by state authorities and found to contain 48.6% diethylene glycol, exceeding permissible limits. DEG is a toxic substance used in industrial solvents that can be fatal if ingested even in small amounts. In response, multiple states have taken action. Madhya Pradesh government has banned the sale of Coldrif cough syrup across state where most of the deaths have been reported. Dr. Praveen Soni, a government pediatrician who also runs his private practice, was taken into custody late Saturday, October 4, 2025 night, accused of having prescribed the now banned Coldrif syrup that has allegedly caused the deaths of children over a period of 1 month. पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासी अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था कोल्ड्रिफ उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाइथीलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। With effect from October 1, the sale of the cough syrup manufactured by the city-based firm has been prohibited across Tamil Nadu. Kerala has also opted for a complete suspension as a safety measure despite a preliminary probe by the State Drugs Control Department confirming that the problematic batch of Coldrif cough syrup was not sold in the state. The Telangana Drugs Control Administration also issued a public alert, a stop use notice for Coldrif cough syrup. Central Drug Standard Control Organization has also initiated risk-based inspection of drug manufacturing units in 6 states following collection of 19 samples including that of cough syrups, antipyretics and antibiotics. The manufacturing units are in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Maharashtra where 19 samples of different drugs were manufactured. The Centre on October 3, 2025 had issued an advisory to all states saying that cough and cold medications should not be prescribed to children below 2 years.